wettability. So I thought that I should give answer in front of all students because they might have also this confusion. ना? As I told you in previous lectures, कि different mechanisms होते हैं अपना hydrocarbons oil recovery जिनकी वजह से हो रही होती है रिजर्वायर में. So one of them is rheology, another is IFT reduction, and third one is wettability alteration. So a rheological behavior is concerned with the polymer, and IFT and wettability, these both are different mechanisms, and never confuse them as a same mechanism to be treated. Interfacial tension वो फोर्स है बेसिकली किसी भी दो फ्लूइड्स में जो उनको मिसेबल या इमिसेबल रखती है. फॉर एग्जांपल अगर आप पानी और ऑयल को एक ग्लास में मिक्स करो तो दे विल नॉट मिक्स टुगेदर because these both are immiscible. तो इन दोनों के दरमियान जो इंटरफेशियल टेंशन होगी it means it has high interfacial tension. इसी तरह ऐसी दो फ्लूइड्स जो आपस में easy to mix हो या they have a potential to mix by any force or by any means, तो उनकी इंटरफेशियल टेंशन कम होगी और उनकी मिक्सिंग के मिक्सिबिलिटी के चांसेस ज्यादा होते हैं. दैट्स इंटरफेशियल टेंशन बेसिकली. तो सरफेक्टेंट यही काम कर रहा होता है. नीचे जब रिजर्वायर में जाता है तो वो ऑयल के साथ क्योंकि उसकी हमने पढ़ी थी कि कंपोजिशन ऐसी होती है कि एक साइड उसकी हाइड्रोफिलिक होती है और दूसरी साइड हाइड्रोफोबिक होती है. तो वो नीचे जाके रिजर्वायर की जो वहां पे ऑयल प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करता है और मिसेबल होने की कोशिश करता है ऑयल के साथ और इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करता है. वंस योर इंटरफेशियल टेंशन इज रिड्यूस्ड योर ऑयल बिकम्स मोबाइल एंड इट्स being produced. Now what is wettability? Wettability is the ability of any rock. अब IFT में rock का कोई concept नहीं है. Those are just two fluids. Wettability is the ability of any rock to allow any fluid to be sprayed on its surface. As simple as that. कि कोई भी ऐसी fluid जो आपके rock surface पे spread होने के affinity रखती हो, जो रॉक उसको अलाउ करे, वो वेटेबिलिटी होती है. मिसाल के तौर पे कोई रॉक्स हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं, मतलब वो पानी को अलाउ करते हैं सरफेस पे स्प्रेड होने में. कोई हाइड्रोफोबिक इन नेचर होते हैं. तो हम उनको टर्म्स देते हैं ऑयल वेट और वाटर वेट. कि ऑयल वेट वो रिजर्वायर्स होते हैं जहाँ पे उनकी जो रॉक का सरफेस है, इंटरनल पोर स्पेस जो है वहाँ पे उनकी वॉल्स के साथ ऑयल स्टक होता है, मतलब स्प्रेड हो रहा होता है. इसी तरह अगर वो हाइड्रोफिलिक है या वाटर वेट है तो वो फिर पानी को स्प्रेड करता है. तो हम क्या करते हैं, हम रॉक को, जो वेटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि हम जो फ्लूइड इंजेक्ट कर रहे हैं वो ऑलरेडी पहले वो रॉक वाटर ऑयल वेट था, जिसको हम हाइड्रोफोबिक सेंस कहते हैं. तो हम क्या करते हैं, जब फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं तो हम उस रॉक को बेसिकली हाइड्रोफोबिसिटी उसकी रिड्यूस करते हैं, उसको वाटर वेट की तरफ लगा रहे होते हैं, ऑयल वेट को. सो इन रिजल्टेंट आपका ऑयल रिमूव हो रहा होता है और वो फिर वो ट्रेवल करता है आपके रिजर्वायर पे. सो दिस बोथ आर डिफरेंट मैकेनिज्म्स, नेवर मिक्स देम. हर किसी का रूल अपना होता है. और या दिस इज पॉसिबल कि एक ऐसा केमिकल हो जो कि आप यूज कर रहे हो और वो IFT भी रिड्यूस कर रहा हो और वेटेबिलिटी बिल्डर कर रहा हो. You can perform both mechanisms. So a single chemical can do that, but these mechanisms both are different. They are not same. You got the idea? Yes, sir. Chalo beta. We'll start the presentation.
So where we left, I think we were studying mobility control process here. So it says that HPAM, which is partially hydrolyzed polyacrylamide polymer, affects the mobility in two ways. हमने दो उसके बेस पढ़े थे जिससे वो मोबिलिटी रेशियो को कंट्रोल करता है या फेवरेबल बनाता है. So one is its viscosity, which is as this polymer is non-Newtonian in behavior. तो ये जब हम क्योंकि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड्स होती हैं जो कि शेयर थिनिंग और शेयर थिकनिंग बिहेवियर दोनों रखती हैं. अब ये जो पॉलीमर्स होते हैं, अब ना व्हाट इज शेयर थिनिंग एंड शेयर थिकनिंग, के वो अपनी विस्कोसिटी को अकॉर्डिंग टू द शेयर रेट एडजस्ट कर रही होती है फ्लूइड. मिसाल के तौर पे अगर हम उसको हाई शेयर रेट पे ले जा रहे हैं तो वो शेयर थिनिंग में आ जाती है, अपनी विस्कोसिटी को थोड़ा सा कम कर लेती है ताकि वो उस फोर्स को पास कर ले या उस फोर्स को सस्टेन कर ले. इसी तरह जब वो शेयर रेट उसका कम हो जाता है तो वो वापस वो शेयर थिकनिंग फेज में आ जाती है. सो वन बेनिफिट इज इट्स विस्कोसिटी अगेंस्ट द शेयर रेट, एंड द अदर बेनिफिट इज इट्स विस्कोसिटी. पहले जो हम शेयर रेट की बिहेवियर, शेयर थिनिंग और शेयर थिकनिंग का बिहेवियर है, वो एक बेनिफिट है. और दूसरा उसकी विस्कोसिटी बेनिफिट है कि वो जब रिजर्वायर में जाती है तो एक फ्रंट बनाती है और वो फ्रंट आपकी वॉल्यूमेट्रिक स्वीप एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर रहा होता है. तो नॉर्मली दीज पॉलीमर्स हैव डीमेरिट्स एज वेल, कि वो जो ब्राइन सोल्यूशन होती है आपकी, जो सैलिनिटी है रॉक में, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया या दूसरे सॉल्ट्स हो गए, इट अफेक्ट्स दोज polymers, and when they meet this salinity in the reservoir, अब डिपेंड करता है कि इन salinity की कंसंट्रेशन कितनी है. अगर ज्यादा कंसंट्रेशन है तो आपका पॉलीमर की डिटोरिएशन उतनी जल्दी होगी, और अगर पर्टिकुलर किसी एक सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जैसे आपका, अब उसमें फर्दर फिर टाइप्स आ जाते हैं ब्राइन सॉल्ट्स की, कि वो आइदर मोनोवेलेंट हैं या डाइवेलेंट हैं या ट्राइवेलेंट सॉल्ट्स हैं. तो डाइवेलेंट सॉल्ट्स का सीवियर इफेक्ट होता है कि उसका थोड़ा सा भी अमाउंट अगर पॉलीमर के साथ रिएक्ट करता है तो पॉलीमर की विस्कोसिटी खत्म हो जाती है, इट बिकम्स डिटीरिएटेड. सो reservoir temperature is also very important. We have discussed that as well. So in mobility control, we are discussing about the polyacrylamide polymers. जितने भी polyacrylamide polymers होते हैं ये synthetic polymers होते हैं. Natural polymers are like xanthan gum or other polymers, but synthetic, we are discussing synthetic polymers. So they usually adsorb on porous media and are mechanically entrapped as a result of their large physical size. अब लार्ज फिजिकल साइज से मुराद ये है कि आप जब पॉलीमर प्रिपेयर कर रहे होते हो, दैट सॉल्यूशन इज बेसिकली व्हाट वी से is a homogeneous solution when your polymer is being dissolved into the water. But when you see at microns level, you will see these entangled chain structures, and these entangled chain structures are the backbones of polymers. कि हमने, आप अगर पॉलीमर की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसकी एक पूरी चेन होती है और उस चेन में फंक्शनल ग्रुप्स अटैच हो रहे होते हैं. ये जो पूरी चेन है, इट्स लाइक दीज ब्लू लाइंस. अब ये जब क्रॉस करते हैं अपना पोर स्पेसिस से, तो कुछ पोर स्पेसिस की जो
स्पेस है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, तो ये पॉलीमर्स वहाँ पे मैकेनिकली इंट्रैप हो जाते हैं, या उनकी एफिनिटी रॉक के साथ इतनी होती है कि वो रॉक के सरफेस पे अटैच हो जाते हैं और फर्दर मूव नहीं करते। अब ये जो इंट्रैपमेंट्स हैं ये बेसिकली डीमेरिट्स ऑफ पॉलीमर हैं, ये नहीं होनी चाहिए। सो this polymer retention reduces the amount of polymer in solution. It also causes a decrease in the effective permeability of porous media. कि एक तो आपके पॉलीमर की क्वांटिटी को कम करता है, आपने जितना अमाउंट इंजेक्ट किया होता है वो अमाउंट रिड्यूस होता जाता है ड्यू टू दीज इंट्रैपमेंट्स और रिटेंशन। इसको हम जनरल टर्म देते हैं पॉलीमर रिटेंशन, कि पॉलीमर रिटेंशन हो रही है। सो एक तो सोल्यूशन आपका कम हो रहा है, और दूसरा आपके जो रिजर्वायर की इफेक्टिव परमेबिलिटी है, जो जो जहां से आपकी फ्लूइड क्रॉस हो रही है वो भी डैमेज हो रही है। सो क्योंकि हम फ्यूचर में अगर कोई और फ्लूइड इंजेक्ट करें तो उसके लिए आपके पास इफेक्टिव परमेबिलिटी होनी चाहिए, जो कि ये पॉलीमर आपकी इफेक्टिव परमेबिलिटी को रिड्यूस करता है। सो इट इज आल्सो क्लोजिंग द डोर्स फॉर फ्यूचर or other methods to be used. The mobility of this polymer solution is thus reduced to less than that of displaced oil water bank by a combination of viscosity and effective polymer reduction. तो अल्टीमेटली आपका मोबिलिटी रेशियो जो है वो फेवरेबल नहीं रहता, वो एक्सीड करता है मन से, कि आपका ऑयल ट्रेवल नहीं हो रहा, और इंस्टेड ऑफ ट्रेवलिंग displacing the fluid which you need to displace, you are reducing the viscosity of your polymer, and you are reducing the effective permeability of that particular area, जो कि नहीं होना चाहिए। सो पॉलीमर अब ये क्यों होता है, ये डिपेंड्स अपॉन योर रिजर्वायर हेट्रोजेनिटी, के रिजर्वायर में कन्फर्मिटीज कैसी हैं, उनकी इफेक्टिव और रिलेटिव परमेबिलिटीज कैसी हैं, एंड आपने पॉलीमर की कंसंट्रेशन कितनी यूज की है। So these are the important parameters to be considered before selecting any EOR method. It is polymer types other than HPAM may also be used. कि हम HPAM की जगह और कोई और polymers भी use कर सकते हैं. There are a number of polymers, and the most common alternatives are called biopolymers and are produced by fermentation manufacturing process. तो ये जो polymers हैं ये नॉर्मली दो कैटेगरीज होती हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स और बायोपॉलीमर्स। उसमें फिर फर्दर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स होते हैं, बट जनरल क्लासिफिकेशन इन दो की होती है, सिंथेटिक और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। सो इट सेज दैट ये जो सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं, these polymers affect the apparent solution viscosity but have little effect on apparent rock permeability. अब इनमें रिटेंशन बहुत कम होती है, ये जो इंट्रैपमेंट्स होती हैं ये बहुत कम होती हैं, बट अगेन बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही होती है वहाँ नीचे ड्यू टू दिस ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, और सॉल्युबिलिटी इश्यूज होते हैं इस पॉलीमर के, इंजेक्टिविटी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगेन देयर आर लॉट ऑफ डिमेरिट्स ऑफ ईच पॉलीमर। So it says that the most serious limitation to this polymer augmented water flood is the projected ultimate recoveries are small compared with those of other EOR processes. पॉलीमर फ्लडिंग की जो सिर्फ पॉलीमर फ्लडिंग की हम बात कर रहे हैं, पॉलीमर या सरफेक्टेंट के कॉम्बिनेशन की नहीं, या अल्कली या पॉलीमर की एएसपी मेथड की नहीं। एक एसपी मेथड होता है सरफेक्टेंट पॉलीमर फ्लडिंग, दूसरा एएसपी मेथड होता है अल्कली सरफेक्टेंट पॉलीमर फ्लडिंग, जिसमें हम तीनों यूज कर रहे होते हैं। सो इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द वर्ड्स और फ्रॉम द अंडरस्टैंडिंग कि आप जितने केमिकल्स ज्यादा यूज करोगे उतनी आपकी रिकवरी ज्यादा इम्प्रूव। सो एएसपी ज्यादा आपकी ऑयल रिकवरी देता है, बट इट्स नॉट नेसेसरी और मैंडेटरी इन ऑल द केसेस ऑलवेज
तो क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स रोल अपना प्ले कर रहे होते हैं, बट इट इज सेड दैट जो पॉलीमर फ्लडिंग है सर, उनकी जो ऑयल रिकवरीज हैं आज तक जो दुनिया में हुई हैं वो दूसरे सिस्टम्स से कम है. So polymer flooding works primarily to improve macroscopic efficiency rather than microscopic, क्योंकि ये सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसी को फोकस करता है, which is volumetric displacement efficiency या macroscopic. So the process also is affected by production operations that proceed with the polymer flood. Previous excessive water flow following the result in a polymer flood having a very minimal effect. Other processes exist that are based on the application of foams, relative permeability alteration, or permeability blockage in high permeability zones in an attempt to increase oil recovery. As discussed later, mobility control processes also are used extensively with EOR methods to improve overall process efficiency. So now it says that polymer flooding की जो limitations हैं वो ड्यू टू प्रोडक्शन ऑपरेशंस भी हो सकती हैं, और आपका जो प्रीवियसली आपने अगर उसमें वाटर फ्लडिंग पहले की हुई है तो वो वाटर फ्लडिंग से आपने अच्छी खासी ऑयल रिकवरी की हुई है. सो इट्स देयर आर चांसेस दैट दिस पॉलीमर माइट नॉट गिव यू एनी एडिशनल ऑयल रिकवरीज, क्योंकि वहां पे अगर वाटर ने विस्कस फिंगर्स नहीं बनाई और स्लोली एंड ग्रेजुअली उसने मूव किया है, so क्योंकि पॉलीमर भी वाटर ही है in viscous form, so there can be a very little change but not major one, क्योंकि वाटर फ्लडिंग ने ऑलरेडी आपको अच्छी खासी इंक्रीमेंटल ऑयल रिकवरी प्रोवाइड कर दी है. So now we will go for this chemical process. Chemical processes involves the injection of specified liquid chemicals that effectively displace oil because of their phase behavior properties, which result in decreasing the IFT between the displacing liquid and oil. अब इस फिगर में आप जो डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं, सी फ्रॉम द वेरी सेंटर हियर, कि आपका पहले प्री फ्लश होता है तो कंडीशन रिजर्वायर, और प्री फ्लश के बाद आप मिसलर इंजेक्शन करते हो या एडिशनल ऑयल रिकवरी. ऑयल बैंक ये शो कर रहा है सिर्फ यहाँ पे, ये प्रोसेस पार्ट नहीं है. सो प्री फ्लश के बाद आप मिसलर फ्लूइड फॉर रिलीजिंग ऑयल करते हो. आप जो आपका स्लज है सर्फेक्टेंट का आप वो इंजेक्ट करते हो, और आफ्टर सर्फेक्टेंट इंजेक्शन आप पॉलीमर इंजेक्शन कर रहे होते हो. सो वंस यू हैव इंजेक्टेड दीज बोथ केमिकल्स, अब इनकी जो इंजेक्शन का अमाउंट होता है वो ये जितना भी रिजर्वायर है फ्रॉम योर ऑल दिस बैड वॉल्यूम, इसका जितना भी वॉल्यूम है, तो आप की जो मिसलर फ्लूइड होती है, जो सर्फेक्टेंट फ्लूइड होती है, वो इसका अराउंड 10% होती है. कि फॉर एग्जांपल ये अगर 2000 गैलन्स इसका वॉल्यूम है, या तो आप 200 जो गैलन्स हैं सर्फेक्टेंट के वो यूज करते हैं, 10% ऑफ योर टोटल पावर वॉल्यूम. और इसी तरह आप जब उसके बाद पॉलीमर इंजेक्ट कर रहे होते हैं तो वो अराउंड 50% टू 100% ऑफ पीवी होता है. कि 2000 वॉल्यूम है इसका, तो या तो हम एक मिनिमम 1000 गैलन्स इंजेक्ट करते हैं पॉलीमर का, या 2000 गैलन्स तक जा सकते हैं. तो अगेन जब ये आपने दोनों केमिकल्स इंजेक्ट कर लिए, अब सर्फेक्टेंट जैसे ही जाता है तो इट ट्राइज टू रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन, और आईएफटी रिडक्शन कर रहा होता है और ऑयल को मोबाइल करता है. उसके बाद जब हम पॉलीमर क्योंकि सर्फेक्टेंट ने कॉन्टैक्ट कर लिया है, बट नाउ कुछ मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं, कुछ वहां पे स्टैंड कर जाते हैं, लेकिन वहाँ उनमें सर्फेक्टेंट्स की कनेक्टिविटी मौजूद है, मिसिबिलिटी मौजूद है, और पीछे से आपका पॉलीमर आता है और उसको डिस्प्लेस करता है. सो देयर आर मोर हाईली लाइकली चांसेस टू बी
डिस्प्लेस्ड। तो मिसलर्स के बाद हम पॉलीमर फ्लडिंग करते हैं, मतलब पॉलीमर इंजेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद उसको ड्राई फोर्स देने के लिए हम पॉलीमर से पहले हम फ्रेश वाटर का एक बफर जोन इंजेक्ट करते हैं, ताकि, क्योंकि हम नॉर्मली जो चीज वाटर है या जो ड्राइविंग फ्लूइड है, वो हम कोई भी वाटर इंजेक्ट करते हैं, वो रिजर्वायर का ही वाटर होता है या फिर ब्राइन वाटर होता है। तो पॉलीमर को सेफ रखने के लिए पहले हम फ्रेश वाटर का बफर जोन सेंड करते हैं, और उसके पीछे फिर 2 पीवी 3 पीवी तक आपका जो चेस वाटर है या ड्राइविंग ड्राइविंग फ्लूइड है, वो आप इंजेक्ट कर रहे होते हो। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ योर केमिकल प्रोसेस सर्फेक्टेंट पॉलीमर फ्लडिंग। इसी तरह सिर्फ पॉलीमर फ्लडिंग में आप मिसलर सोल्यूशन नहीं डालते, और अगर एएसपी सोल्यूशन कर रहे हो तो अल्कली इंजेक्ट करते हो, फिर सर्फेक्टेंट करते हो, फिर पॉलीमर करते हो। So it depends upon your which type of your technique or your method you are going to use. So it says that there are different number of surfactants available in the market. So नॉर्मली जो हम सर्फेक्टेंट्स की कैटेगराइजेशन करते हैं वो 2 टाइप्स में करते हैं, एनायनिक सर्फेक्टेंट्स और कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स। फिर उनकी फर्दर सब टाइप्स हो रही होती हैं। मेजरली आपके ये 2 टाइप्स होते हैं। अब कौन सा सर्फेक्टेंट यूज करना है और वो क्यों करना है, you should have justification for that. So it says that the surfactant sludge is followed by a mobility buffer, a solution that contains polymer at a concentration of 300 ppm. This polymer solution is often graded in concentration, becoming more dilute in polymer as more of the solution is injected. अब ये वही प्रोसेस डिस्कस कर रहा है कि आपने जब सर्फेक्टेंट इंजेक्ट किया जो मिसलर सॉल्यूशन थी, तो अब फ्यू हंड्रेड पीपीएम कंसंट्रेशन शो कर रहा है कि आप पॉलीमर की कंसंट्रेशन जो है वो अराउंड फ्यू हंड्रेड पीपीएम जस्ट रखते हैं, और बाकी वो पानी होता है। और जैसे ही वो आप उसको नीचे इंजेक्ट कर रहे होते हो और वो पानी के साथ इंट्रोड्यूस हो रहा होता है, तो उसकी डाइल्यूशन हो रही होती है, और इन सिंपल वर्ड्स उसकी विस्कोसिटी रिड्यूस हो रही होती है। The total volume of the polymer solution is typically 1 pV। जो हमने डिस्कस किया था कि कहाँ पे हम आधा पीवी रखते हैं, कहाँ पे 1 पीवी इंजेक्ट कर रहे होते हैं। The micellar solution has limited solubility with the oil and is designed to have an ultra low IFT with the oil phase. अब ये soluble नहीं है आपका जो surfactant है ऑयल के साथ, but it is reducing your IFT with oil. When the solution contacts residual oil drops, the drops under a pressure gradient are deformed as a result of low IFT and are displaced through the pore throats. तो ये जब आपका सर्फेक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं ऑयल के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ऑयल का जो एक साइड जो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है वो ऑयल के साथ अटैच होती है और उसको वहां से रिमूव करने की कोशिश करती है। अब ये मैकेनिज्म आप समझें कि ये फ्लूइड टू फ्लूइड कांटेक्ट है। अब इसमें अगर वो रॉक सरफेस रिमूव हो रहा है, सो इट्स नन ऑफ द आईएफटी मैकेनिज्म्स। आईएफटी का मैकेनिज्म ये है कि वो आपके इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन टू इमिसिबल फ्लूइड्स रिड्यूस करती है। अब रिजल्टेंट क्या हो रहा होता है, दैट्स एन अनदर मैकेनिज्म या अनदर स्टोरी। बट वो ऑयल वहां से मूव हो रहा होता है जो कि उस रॉक पोर्स में प्रेजेंट था। इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि वो रॉक की सरफेस पे ही मौजूद हो, वो रॉक पोर्स में भी मौजूद होता है, तो वो फिर अपना शेप चेंज करता है, डिफॉर्म होता है और फिर वहां से मूव करता है। It's an coalescence of oil drops result in an oil bank that along with water moves ahead of the displacing chemical sludge. The micellar sludge also is designed to have a favorable mobility ratio
with the oil bank and the water flowing ahead of the sludge to prevent viscous fingering of the sludge into the oil bank and to increase the macroscopic displacement efficiency. अच्छा, ये जो आप जब सर्फेक्टेंट इंजेक्ट कर रहे होते हो और मिसलर सोल्यूशन जो होती है वो जैसे ही रिजर्वायर में मूव करती है तो उसके अहेड वो ऑयल और पानी का एक मिक्सचर हो रहा होता है, मिसेबल फ्रंट बन रहा होता है। और वो जो फ्रंट होता है वो आपके स्लेज को वाटर फ्लडिंग की तरह विस्कस फिंगरिंग में नहीं लेके जाता, उसको प्रोटेक्ट करता है और जो आपकी वॉल्यूमेट्रिक स्वीप एफिशिएंसी है उसको इम्प्रूव करता है। तो ये सोल्यूशन एरियली और वर्टिकली मूव कर रही होती है सब डायरेक्शंस में, और फिर यू आर एबल टू इम्प्रूव योर रिकवरी रेट ना। As you see in this diagram, it says that the polymer solution mobility buffer is injected to displace the micellar solution efficiently. अब हमने जो नंबर 3 इंजेक्ट किया हुआ ये आपका पॉलीमर है। ये हम नंबर 2 जो जोन है जिसको हम सरफेक्टेंट कह रहे हैं या मिसेलर सोल्यूशन कह रहे हैं, जिसको पुश कर रहा होता है और फर्दर रिजर्वायर की तरफ मूव करवाने में सपोर्ट करता है। अब जितनी प्रेशर के साथ ये आपकी जो मिसेलर सोल्यूशन है, जो सरफेक्टेंट्स है, वो पोर स्पेसेस में एंटर होते हैं। तो जब इंटरेक्शन होता है उनका ऑयल के साथ, और ऑयल में डिफॉर्मेशन आती है, ऑयल में मोबिलिटी आती है और वो वहां से मूव हो रहे होते हैं। द IFT between the polymer and micellar solution is quite low and only a small residue saturation of the micellar solution is trapped. ठीक है, बैक साइड पे तो ये आपका जो सरफेक्टेंट और पॉलीमर की जो इंटरफेशियल टेंशन है आपस में वो बहुत कम होती है, क्योंकि आपका जो पॉलीमर है वो ज़्यादा विस्कस होता है और उसकी जो डाइल्यूशन है वो इसलिए नहीं होती कि आपका सर्फेक्टेंट पार्शली हाइड्रोफिलिक और पार्शली हाइड्रोफोबिक होता है। So the existence of a favorable mobility ratio between the polymer and micellar solution also contributes to an efficient displacement. This process displacements are immiscible, that is, completely soluble does not exist between the micellar solution and or between the high micellar and polymer solution. So it says that आपका इस मेथड जो SP मेथड है, जो सर्फेक्टेंट पॉलीमर मेथड है, इसके थ्रू आप प्रॉपरली जो डिस्प्लेसमेंट एफिशिएंसीज हैं उनको अचीव कर सकते हो, दोनों को, जो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक है। तो जो मिसलर सोल्यूशन होती है वो आपकी उस जोन्स में जाके IFT को रिड्यूस करती है जहां पे वाटर फ्लडिंग वाज नॉट सक्सेसफुल। तो जो डिस्प्लेसमेंट है ये इमिसिबल होती है इन दोनों की, अपना मिसलर और पॉलीमर की। So that's the reason that you are producing more hydrocarbons compared to just polymer flooding. So a low IFT between displacing fluid is desirable at both ends of the micellar sludge. Low IFT between the micellar solution and oil is required to mobilize discontinuous oil drops or films. So it's defining the mechanism of IFT कि IFT आपकी जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं या जो ऑयल कोलिशंस हैं उन रॉक पोर्स में, उनके साथ वो कांटेक्ट में आता है सर्फेक्टेंट और उनको वहां से मोबाइल करता है। क्योंकि IFT जैसा ही रिड्यूस हो रही होती है, इट मीन्स वो उसकी अटैचमेंट उस सर्फेक्टेंट के साथ ज्यादा है। अब सर्फेक्टेंट्स उसको पुश कर रहे हैं कि भाई बाहर निकलो, तो कंटिन्यूसली दिस फोर्स इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड ना। और क्योंकि सर्फेक्टेंट अब मिक्स हो रहा है ऑयल के साथ, तो मिक्स इन अ सेंस दैट इट्स नॉट मिक्सेबिलिटी बट इट्स मिक्सिंग। आपकी जो दोनों की सरफेस कॉन्टैक्ट्स हैं वो, उनका जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो रहा है और वो आपको फर्दर, फिर आप जब सर्फेक्टेंट्स को पुश कर रहे हो तो ऑयल भी वहां से मोबाइल हो रहा है और अपनी जोन्स को, जहाँ पे अनस्वेप्ड जोन्स थे
वहाँ पे वो ऑयल ड्रॉप्स एंड फिल्म्स जो हैं वो मोबिलाइज हो रहे होते हैं. So at the back of micellar sludge, a low IFT results in minimal trapping and bypassing of micellar solution. Clearly, if the micellar solution was not efficiently displaced by a polymer solution, the micellar sludge would deteriorate rapidly. तो इसका मकसद कहने का ये है कि आप जब सोल्यूशन जो आपका आईएफटी स्लज है, जो मिसलर स्लज है, वो नॉर्मली आपका अच्छा खासा अमाउंट जो अनसेप्ड जोन्स का ऑयल का वो रिमूव कर लेता है. लेकिन इन सम केसेस वो ड्यू टू रिजर्वायर कन्फर्मिटी और improper pressure balance और any reason can be there कि आपका वो मिसलर सोल्यूशन ऑयल को वहां से नहीं निकाल पाता, तो पीछे से जो पॉलीमर आ रहा होता है इट परफॉर्म्स इट्स जॉब एंड द रिमेनिंग ऑयल इज बीइंग डिस्प्लेस्ड एज वेल. So it says that surfactant process have significant potential because of the possibility of designing a process where both EB and ED increase. There are important problems, however. जो भी आपके EOR methods हैं, just keep that in mind कि उनके merits और demerits लाजमी हैं. There isn't any material in the world or up till now any such method or any such chemical which does not have its limitations. So we should be careful about any material selection when we are doing that. We need to see that what demerits are there for this chemical instead of merits. So if demerits are negligible, so we can go with that chemical. If not, then we will try to find another chemical. So it says that ये जो surfactants होते हैं ये आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं, जिसमें बहुत ईवी और ईडी है. तो इसका मकसद ये है कि आपकी ऑयल रिकवरी ज़्यादा होगी. जैसे पॉलीमर था वो सिर्फ आपका वॉल्यूमेट्रिक स्वीप एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहा था, बट द सर्फेक्टेंट it improves overall efficiency, which is ED and EV both. But there are problems with this surfactant, however. No? So the process is complex technology and can be justified only when oil prices are relatively high and when residual oil after water flooding is substantial. अब यहाँ पे मुख्तलिफ कैटेगरीज कह रहा है कि पहले तो आपकी जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है वो अंडर कंट्रोल हो, क्योंकि ये सर्फेक्टेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और आप इनको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इंजेक्ट भी नहीं कर सकते. सो ऑयल प्राइसेस शुड आर रिलेटिवली हाई एंड आपने जब वाटर फ्लडिंग की थी तो वाटर फ्लडिंग के दौरान आपका जो ऑयल प्रोड्यूस हुआ था वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ था. इट मीन्स दैट देयर इज स्टिल a good amount of oil is still present in the reservoir, and then there are chances for the surfactant to be successful. So the chemical solutions which contain surfactant, co-surfactant, and sometimes oil are expensive. Chemical losses can be severe. Such losses can occur as a result of adsorption, phase partitioning, and trapping, and bypassing owing to fingering if mobility control is not maintained. These losses must be compensated or for by increasing the volume of micellar solution injected. So yeah, in this paragraph it's discussing about the demerits and the way forward for surfactants के आपके जो जितने भी surfactant types हैं वो they are quite expensive in a sense कि हम उनको हजारों गैलन्स की सूरत में इंजेक्ट कर रहे होते हैं. So you need it in a very big quantity. तो अगर आपका केमिकल लॉस हो जाता है so it's a severe loss, और अब उसकी वजह कुछ भी हो सकती है. एब्जॉर्प्शन ऑन द सरफेस रॉक
रॉक्स रॉक्स उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फेस पार्टनरिंग पार्टनरिंग हो सकती है कि आपका जो ऑयल और वाटर नीचे प्रेजेंट है, आपका ऑयल तो मोबाइल हो रहा है लेकिन पानी उसके साथ ज्यादा मोबाइल हो रहा है, और वो उस ऑयल को बाईपास करते हुए प्रोडक्शन वेल तक आ जाता है। और इन ओवरऑल सेंस दैट आपकी मोबिलिटी कंट्रोल फेवरेबल नहीं रहता। एंड उसका सोल्यूशन ये होता है कि पहले आपने 10% और सर्फेक्टेंट का इंजेक्ट किया था, so now you are going to inject more than that in order to cover the damage ना, कि आपका जो केमिकल लॉस हुआ है उसको आप फर्दर इफेक्टिव बनाओ, और आईएफटी रिड्यूस करके आप ऑयल को मोबिलाइज करो। तो now it says that stability of surfactant systems in general is known to be sensitive to high temperatures and high salinity। अब वही बात आ रही है कि ये जो सर्फेक्टेंट्स है, अगेन सेम लाइक पॉलीमर, they are sensitive to the salinity and temperature factors ना, कि अगर किसी रिजर्वायर में ये पैरामीटर्स ज्यादा हैं, जिसमें टेम्परेचर ज्यादा है या आपका सैलिनिटी इफेक्ट वहां पे ज्यादा है, तो ये आईएफटी रिडक्शन हो सकती है। The systems that can withstand these conditions must be developed if the process is to have wide applicability। So researchers are working on that कि ऐसा कोई केमिकल हो या ऐसे कोई मेथड्स हो जिसमें ये जो आपके रिजर्वायर्स हैं, जो कि हाई टेम्परेचर और हाई सलाइन रिजर्वायर्स हैं, आप उनको फेस कर सकें और वो केमिकल्स विथ स्टैंड कर सकें, एंड दे कैन प्रोड्यूस इट फ्रॉम दोज रिजर्वायर्स एज वेल। बिकॉज आई ऑल द टाइम डिस्कस वन थिंग दैट किसी भी रिजर्वायर में जो प्रॉपर्टीज होती हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो उनका इफेक्ट मल्टी वेरिएबल इन नेचर होता है, कि वन इफेक्ट एट अ टाइम नहीं होता, जिसको हम ओवेट कहते हैं, वन वेरिएबल एट अ टाइम, बट इट्स मल्टी वेरिएबल एट अ टाइम। कि आपका एक, फॉर एग्जांपल, छोटा सा उसका मिसाल मैं आपको दूं, कि आप कोई भी केमिकल अगर इंजेक्ट कर रहे हो और वो केमिकल जाके आपके क्रूड ऑयल से रिएक्ट कर रहा है और आईएफटी को रिड्यूस कर रहा है, तो अब इस केमिकल पे कितनी ज्यादा पैरामीटर्स एट द सेम टाइम इफेक्ट कर रहे हैं। टेम्परेचर पैरामीटर है, वहाँ पे प्रेशर का पैरामीटर है, सैलिनिटी का पैरामीटर है, अनकन्फर्मिटी है। सो देर आर नंबर ऑफ पैरामीटर्स एट द वेरी सेम टाइम इफेक्टिंग दैट केमिकल। तो जैसे ही ये बिहेवियर अल्टरेशंस होती हैं, so it's very ambiguous and you are not able to understand that ये changes क्यों आती हैं। Sometimes it's due to temperature, vibrational effect होता है, sometimes due to salinity, कि आपका electrolytes जो बॉन्डिंग होती है आपके केमिकल की, वो डिस्ट्रॉय हो रही होती है। So there can be number of effects at the same time ना? So that's very important to understand this behavior, and there could be or there should be any particular chemical which can stand these both। अगर कोई material है but it's very expensive and it's not economical or feasible for the project, so we need to find a practical solution for that as well ना? So for example, early applications have essentially excluded carbonate reservoirs, in part because of the high salinity usually associated with such formations and high concentrations of divalent ions। The, there are several variations to the surfactant process
other chemical methods also have been developed. So अगेन ये वही बात कर रहा है कि इन प्रीवियस ईयर्स आप कार्बोनेट रॉक्स में सर्फेक्टेंट्स को इंजेक्ट नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि these carbonate rocks have high salinity and divalent salinity इनमें बहुत ज्यादा होती है। As I told you earlier that जो divalent ions जो divalent salinity है वो ज्यादा डिटेरियोरेट करती है या ज्यादा इफेक्ट करती है आपके केमिकल को। तो आप फिर डिफरेंट वेरिएशंस या डिफरेंट एडिशंस कर रहे होते हो सर्फेक्टेंट में, या कोई दूसरा केमिकल मेथड आप उसके लिए प्रपोज करते हो। So again, it's not that easy to do. I'm just saying, and you're listening. It's very easy to do that, but to to go and perform these jobs, it's hell of a job to do that, and it's very complex in nature. So you need to be very uh, precise, and you need to be very careful and understanding the parameters, the characteristics of both the reservoir and the rock as well. So in alkaline flooding, it says it's a process in which injected alkaline chemicals react with certain components in the oil to generate a surfactant in situ. The process has potential but apparently is limited in scope of application. So in अच्छा, यहाँ ये जो अल्कलाइन फ्लडिंग है इसको हम फिर डिस्कस करते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। So let's take a break for 5 to 10 minutes. So इंशाल्लाह फिर 11:30 बजे से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। काइंडली अपने इस क्लास की अटेंडेंस मार्क कर दें, एंड आपकी अटेंडेंस वही काउंट होगी जो अपने यहाँ चैट बॉक्स में लिखी है। सो डोंट फॉरगेट टू टेक्स्ट योर रोल नंबर इन दिस चैट बॉक्स, दैट्स योर अटेंडेंस बेसिकली। सो समटाइम्स जो एक्सेल शीट है उसमें सही से नहीं आती रोल नंबर्स या अटेंडेंस और स्टूडेंट्स की। सो it's mandatory for all the students to text their roll number in the chat box in my class, and don't forget to join the next class and write your roll number in that as well. Because some of the students yesterday they didn't wrote their roll number in first class, so their attendance was not considered. So please write your roll numbers in this chat box. No? Thank you.
you